हेलो एवरीवन आशा करूची आपण समस्ते भल अछंती जेमिति कि मु लास्ट क्लास रे समस्त को कहिथिली आजी आमे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को स्टार्ट करिया को जाउचो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेल चैप्टर आमे पैरेलली करिबा अल्टरनेटिवली ईच यूनिट रो गोटे गोटे टॉपिक आमे कवर करी करी चलीबा सो दैट हमर टीचिंग और लर्निंग ता बोथ मोनोटोनस और मेमोरी हेवी हबनी तो सेल जो तमर यूनिट अच्छी ता अंडर रे जो स्पेसिफिक टॉपिक ता हमें देखिया को जाउछु आज रो क्लास रे हला सेल थियरी एंड सेल स्ट्रक्चर ओवरव्यू सेल जो चैप्टर ता अच्छी एनसीईआरटी बिगिनिंग रे गोटे क्वेश्चन पचारुची व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड एन इनएनिमेट थिंग एज नॉन लिविंग तो बेसिकली से पचारुची कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग भितरे व्हाट इज द डिफरेंस तो यार आंसर हैला प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज द सेल तो सेल ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो गोटे डिफाइनिंग फैक्टर एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल किछि ऑर्गेनिजम्स को धेरे ओनली वन सेल थाए they are known as unicellular organisms while others they have many cells called as multicellular organisms. Now we are left with the question what is a cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. तो हमें cell को structural unit काहे की कहू? Because every organism is made up of either one or more number of cells. Okay? तो जेमिति हमारा हाउस ब्रिक रू तैयारी होची सेमिति गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स दे फॉर्म टिश्यूज फॉर्म organs form organ system and organ systems together make a organism तो जदि देखिबो स्मॉलेस्ट यूनिट कोन तमर both unicellular और multicellular organisms रे cell is the smallest structural unit okay और functional unit काहे की कहूछु देखो तमरो बॉडी भितरे every life process which takes place inside the cell such as respiration digestion synthesis of protein excretion growth reproduction एगुडा सबु कोठी हुए एगुडा सबु टेक प्लेस करे तमरो सेल रे that is why cell is called as the functional unit so cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms clear if we see the number of cells present in an organism we can classify them as either unicellular organism or multicellular organism तो जदि गोटे organism रे number of cell is only one then it is called as unicellular if organism is made up of many cells it is called as multicellular तो जदि गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिबा जेहेतु तांको भितरे जस्ट सिंगल सेल थाए से सिंगल सेल शुड बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली as well as perform all essential life functions very important line तामाने कोन एग्जांपल जदि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रो देखिबा अमीबा पैरामीशियम क्लामाइडोमोनास यूग्लेना बैक्टीरिया ए माने समस्ते इंडिपेंडेंटली नेचर रे एग्जिस्ट करि परथुबे आउ जहां भी तांकर लाइफ प्रोसेस important थाए जेमिति कि digestion excretion तमरो respiration all that should be essentially taking place in the cell okay जदि हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रे एग्जांपल देखिबा सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एटी कोन थाए डिवीजन ऑफ लेबर थाए काहे कि ना सेल्स तमरो टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम थाए तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर एग्जांपल हमें नहीं परबा ह्यूमंस ओके ऑल द एनिमल्स प्लांट्स ओके दे आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एबे हमें देखिबा बहुत गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा के हैला सेल थियरी माने कोन all living organisms are composed of cells and products of cells ता माने जहां भी हमरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती से माने मेड अप ऑफ cells or their products okay who proposed it two independent scientists Matthias Schleiden in the year 1838 who was a German botanist
and Theodor Schwann in the year 1839 who was a German zoologist. तो मैंने कौन ऑब्जर्व कले देखो स्लेडेन बहुत सारा प्लांट्स को ऑब्जर्व कले एंड फाउंड आउट दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स और प्लांट सेल्स ही फर्दर टिश्यूज फॉर्म करंती ओके एंड थियोडर श्वान सी बहुत सारा एनिमल सेल्स को स्टडी कले एंड फाउंड आउट दैट एनिमल बॉडीज गुड़ा मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स ओके एडिशनली इठी देखो इंपॉर्टेंट Schwann तुम्हारे zoologist थिले but he also found out that cell wall ता तुम्हारा गोटे unique character for the plant cell okay and also he was the first to observe the plasma membrane okay so together they formulated the original cell theory but यार limitation गोटे थिला what was it that it did not explain how new cells are formed से एटा तो स्टेट कर देले कि organisms all of them are made up of cells but how do new cells come सेटा original cell theory explain करी पारी नथिला जोटा कि तार गोटे मेजर लिमिटेशन थिला तो आगु को कौन हैला ना ओरिजिनल सेल थ्योरी को आउ गोटे साइंटिस्ट आसिले रुडोल्फ विर्चाउ इन द ईयर 1855 who modified the cell theory so what did he find out he stated omnis cellula e cellula very important statement ta mane hela all the cells arise from pre-existing cell omnis mane all cellula mane cell e cellula mane from cells so ता माने हला जहाँ भी हमर सेल्स अछंती से माने ओरिजिनेट करंती प्री एक्जिस्टिंग सेल रो एबे हमें जानुचु कि दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड by the division of the old cells okay so it was first stated by Rudolf Virchow the modified cell theory as we know today is all living organisms are composed of cells and products of cell and all cells arise from pre-existing cell तामाने जहाँ भी हमारा organism अछंती से माने कर basic fundamental unit हला cell or made up of cells और जहाँ भी हमारा new cells अछंती से माने originate करंती from the old cells is that clear scientist year name very important okay एमती गोटे ट्रिक रे मने रखी देबो SSV Schleiden Schwann Virchow okay Schleiden हला plants Schwann hela animals which are omnicellular, ecellular or new cells from old cells. Is that clear? इठी तमरो गोटे important NCERT रो statement अछि जोटा कि AR type question रे आसी पारे ताकू देखि दबा टिके anything less than a complete structure of a cell cannot ensure independent living ता माने जदि सेल रो कंप्लीट स्ट्रक्चर रु किछि भी कम रहिला फॉर एग्जांपल गोटे सेल ऑर्गेनेल नै गलो तमे सेल ऑर्गेनेल माने कोन राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खाली इंडिविजुअली जदि ताकू नै जिवो कैन इट सर्वाइव ऑन इट्स ओन नो why because it cannot perform all the cellular activities needed for its survival right so for a organism to become alive to be living it has to be no less than a cell okay आउ किछिटा important scientist रो नेम अछि ताकू देखि दबा Antonie von Leeuwenhoek he was the first to observe and describe a live cell okay Robert Brown he discovered nucleus आउ हमारा cell रो जो study अछि it was improved in later years because of the advancement of electron microscope discover hela pore cell ro structure को आमे बहुत बढ़िया डिटेल भाबरे देखि पारिलु आउ अंडरस्टैंड करि पारिलु क्लियर नेक्स्ट टॉपिक हैला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल तो एथिरे कोन ना गोटे ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अ सेल कुहा जाउची तो जदि तुमे गोटे सेल को नबो ईच सेल बीट प्लांट बीट एनिमल बीट तुम्हारा बैक्टीरिया सबस्तिंकर गोटे आउटर डिफाइनिंग लेयर थाए जहा को आमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहू ओके तो जदि प्लांट सेल्स नबो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो आउटसाइड रे गोटे सेल वॉल प्रेजेंट थाए व्हिच मेक्स इट्स आउटर बाउंड्री तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा कोन करे इनर बाउंड्री करे इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स
जदि एनिमल सेल्स देखिबो एनिमल सेल्स डू नॉट हैव एनी cell wall, तो तांकर outer boundary is made up of plasma membrane only. Okay, इटा गोटे broad difference between the plant and animal cell. Second structure जोटा NCERT रे कुहा हेची सेटा हला तमरो न्यूक्लियस. एबे न्यूक्लियस कोन एटा गोटे membrane bound organelle. या भितरे तुमरो क्रोमोसोम्स थाए आ क्रोमोसोम्स कोन करे chromosomes contain the DNA. DNA टा हला हमर genetic material. तो membrane bound nucleus जदि तमे देखिबो it is a key feature that distinguishes eukaryotes from the prokaryotes. Okay, prokaryotes case re no membrane bound nucleus is found, while eukaryotes have a membrane bound nucleus. Also, prokaryotic cells do not have any membrane bound organelles, whereas eukaryotic cells possess a lot of membrane bound cell organelles. Okay, next hela amara cytoplasm. देखो plasma membrane भितर को जदि तमे गोटे सेल रो देखिबो it has a semi fluid matrix जोटा कि तमरो सेल को फिल करे. ए semi fluid matrix टाकू आमे cytoplasm कहू and it is present both in prokaryote as well as the eukaryote. ए मैट्रिक्स टा हला तमरो मेन साइट जोटी कि तमरो सबु मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुए, केमिकल रिएक्शन हुए. ओके, that is known as your cytoplasm. Fourth hela tamara cell organelles. Cell organelles goda tamara cytoplasm re disperse heki thae au they can have membrane or they may lack it. Jodi membrane achi cell organelles re taku kahiba ame membrane bound organelle, jodi membrane nahi taku ame kahiba membrane less organelle. तो एबे तमरे membrane bound organelles टा only found in eukaryotes. They are absent in prokaryotes. आमे पूर्व स्लाइड रे देखिथिले. तो एग्जांपल कोन तमरे membrane bound organelles रो endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles, all of these are examples of your membrane bound organelles. एबे non membrane bound organelles जदि हमें देखिबा तार एग्जांपल हैला राइबोसोम्स आउ सेंट्रोसोम. एबे राइबोसोम ता तमरो बोथ प्रोकैरियोट आउ यूकैरियोट रे पाया जाए, किंतु सेंट्रोसोम जदि हमें देखिबा सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स. हमें एमानको विषय रे डिटेल रे आगन जहां भी क्लास आसुची तादरे आगामी क्लास रे पढिबा. नेक्स्ट हला तमरो राइबोसोम्स. एटा बहुत इंपोर्टेंट. राइबोसोम हला ओनली ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट. एबे यूकैरियोट्स जदि हमें देखिबा राइबोसोम टा तमरो साइटोप्लाज्म रे तो थाए ही. Also it is present within the organelle and on the surface of the organelle. Which organelle ro within थाए? Ribosome टा तमरो mitochondria in case of both plants and animals, आउ in case of plants chloroplast भितरे तमरो राइबोसोम टा प्रेजेंट थाए. Also ribosome is present on the surface of a cell organelle which is rough endoplasmic reticulum. ओके, तो मने रखो राइबोसोम टा प्रोकैरियोट केस रे तमरो साइटोप्लाज्म रे थाए. यूकैरियोट जदि तमे देखिबो सेटा तमरो साइटोप्लाज्म रे थाए, विदिन ऑर्गेनेल थाए and on the surface of RER भी थाए. ओके, नेक्स्ट हमें देखिबा सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम टा भी गोटे मेम्ब्रेनलेस तमरो ऑर्गेनेल. इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. आर काम कोन? इट हेल्प्स इन सेल डिविजन. ओके, अमर जहां भी सेल्स अछंती दे कम इन अ वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप. ए स्लाइड टा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज ऑफन ए टेबल जोटा अछि सेद्रु तमरा मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू टाइप आसे. तो पूरा रिमेंबर करिवार अछि ए डेटा गोडा को. तो स्मॉलेस्ट सेल जदि हमें देखिबा इट इज माइकोप्लाज्मा. तार साइज हैला 0.3 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया जदि में देखिबा तार साइज टा रेंज करूची 3 to 5 माइक्रोमीटर. ह्यूमन आरबीसी गोटे अराउंड 7 माइक्रोमीटर डायमीटर. और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमें जदि देखिबा ऑस्ट्रिच एग. तो नर्व सेल हमें जदि देखिबा इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल. ओके, तो तुमको जदि पचरा जीबा अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तमे करि परिबो कि नहीं?
ओके डेटा गुडा पूरा मन रखी दबार अछि ओके नेक्स्ट है सेल्स रो डिफरेंट शेप थाए कौन शेप हे परिबो डिस्क शेप पॉलीगोनल भी हे परिबो कॉलमनार भी हे परिबो क्यूबॉइडल भी हे परिबो थ्रेड लाइक भी हे परिबो इरेगुलर भी हे परिबो एबे भाबो हमर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स थाए कोन पे व्हाट डज इट हेल्प इट तो देखो सेल्स रो डिफरेंट शेप तांकर फंक्शन रे हेल्प करे फॉर एग्जांपल जदि तुमे आरबीसी रो देखिबो तार बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप थाए तो ए शेपटा बेस्ट फॉर efficient gaseous exchange तो आरबीसी adopt this shape similarly जदि तुमे nerve cell देखिबो nerve cell हला कोन बहुत लॉन्ग तो बहुत लॉन्ग हबा जोगु एटा पूरा impulse transmission को rapidly करि पारे ओके नेक्स्ट स्लाइड रे में देखि दबा डिफरेंट शेप्स जहां भी हमें देखि पारुची विद इन द सेल्स एबे में देखि नबा डायग्राम टा जोटा तुमरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रे अछि देखो red blood cells टा तुमरा biconcave in shape which helps in efficient gaseous exchange white blood cell टा तुमरा amoeboid shape why amoeboid shape देखो amoeboid shape हबा जोगु से phagocytosis perform करि परिबो आउ तुमरा जो foreign तुमरा pathogens रहला ताकू आराम से engulf करि परिबो जोटी भी तुमरा absorption दरकार होची सेठी तमे columnar epithelial cells पाई परिबो which are long and narrow and help in efficient absorption nerve cell को जदि हमें देखिबा they are branched and long and this shape it helps in efficient what transfer of the impulse trachea को जदि हमें देखिबा it is elongated in shape देखो elongated shape हबा जोगु से तमरा कोन स्टेम रो एक्सिस रे आराम से पैक हे परिबा और efficient वाटर ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करिबो मेसोफिल सेल्स को जदि तमे देखिबो स्पेशली द स्पंजी मेसोफिल रो एटा डायग्राम दिया हिची तो एगुडा हला कोन तमरो राउंड शेप रे देखो राउंड शेप केमिति हेल्प करे राउंड शेप हेले तमरो जहा भी फोटोसिंथेसिस हला फोटोसिंथेसिस रे कोन कार्बन डाइऑक्साइड तमरो बाहरिबो एबे जदि तमरो स्क्वायर टाइप रो सेल हितांता स्क्वायर टाइप ऑफ सेल हेले कोन टाइटली पैक हे जिवो तो जो गैस टा बाहरिबो सेटा केमिति रिलीज होबा आउटसाइड को सो द स्पंजी मेसोफिल्स दे आर राउंड इन शेप तो राउंड हेले कोन आराम से पैक पूरा टाइटली हबनी देखो मझी मझी रे स्पेस रहइबो तो सेही शेप स्पेस को तुमरो कार्बन डाइऑक्साइड ता आराम से डिफ्यूज करि परिबो एबे तुमे देखिलो केमिति शेप ऑफ द सेल्स हेल्प इन देयर फंक्शन ओके आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट तो आज क्लास रे हमें देखिले लिविंग और नॉन लिविंग भितर कौन डिफरेंस सेल कौन यूनिसेलुलर सेल मल्टीसेलुलर सेल ल्यूवेनहुक कौन करथिले रॉबर्ट ब्राउन कौन करथिले राइट तापरे सेल थ्योरी को किए प्रपोज करथिले स्लेडन एंड स्क्वान जो सेल थ्योरी देथिले तार लिमिटेशन कौन थिला रॉबर्ट विर्चाउ ताकू केमिति मॉडिफाई कले आ मॉडिफाइड सेल थ्योरी तमरा कौन एगुडा सबु हमें देखिले ता छडा कोन हमें ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द सेल स्ट्रक्चर देखिले केमिति न्यूक्लियस डिसाइड करे वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तापरे साइटोप्लाज्म कोन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स कोन मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एगुडा सबु हमें देखिले तापरे हमें देखिले कि सेल केमिति डिफरेंट साइजेस आउ शेप्स रे थाए आउ सेटा केमिति तांगर फंक्शनैलिटी को हेल्प करे तो आशा करूची आजिरो चैप्टर टा बहुत भलो भाबरे समस्त को बुझी आस्थिबो जदि किछि डाउट अछि तो प्लीज रीच आउट टू मी आई विल बी हैप्पी टू आंसर अच्छा ताले नेक्स्ट क्लास रे में कोन पढिया को जाउछु नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिवा को जाउछु किछिटा एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर तापरे हमें पुनथरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को jiba so thank you everybody if you enjoyed the video today please like share and subscribe to my channel have a very good day bye bye